wish Andrew Cuomo only the best in private life. But let tonight be the final time I utter his name as we turn the page on a politics that abandons the many and answers only to the few. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. And that is because of you. So before I say anything else, I must say this. Thank you. Thank you to the next generation of New Yorkers who refused to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you. Or as we say on Steinway, ana minkum wa ilaykum. Thank you to those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. Yes, aunties. To every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city, and this democracy is yours too. This campaign is about people like Wesley, an 1199 organizer I met outside of Elmhurst Hospital on Thursday night. A New Yorker who lives elsewhere, who commutes 2 hours each way from Pennsylvania because rent is too expensive in this city. It's about people like the woman I met on the BX33 years ago, who said to me, I used to love New York, but now it's just where I live. And it's about people like Richard, the taxi driver I went on a 15-day hunger strike with outside of City Hall, who still has to drive his cab 7 days a week. My brother, we are in City Hall now. This victory is for all of them, and it's for all of you. The more than 100,000 volunteers who built this campaign into an unstoppable force. Because of you, we will make this city one that working people can love and live in again. With every door knocked, every petition signature earned, and every hard-earned conversation, you eroded the cynicism that has come to define our politics. Now I know that I have asked for much from you over this last year. Time and again, you have answered my calls. But I have one final request. New York City, breathe this moment in. We have held our breath for
know. We have held it in anticipation of defeat. Held it because the air has been knocked out of our lungs too many times to count. Held it because we cannot afford to exhale. Thanks to all of those who sacrificed so much, we are breathing in the air of a city that has been reborn. To my campaign team, who believed when no one else did, and who took an electoral project and turned it into so much more, I will never be able to express the depth of my gratitude. You can sleep now. To my parents, Mama and Baba, you have made me into the man I am today. I am so proud to be your son. And to my incredible wife, Rama, Hayati, there is no one I would rather have by my side in this moment and in every moment. To every New Yorker, whether you voted for me, for one of my opponents, or felt too disappointed by politics to vote at all, thank you for the opportunity to prove myself worthy of your trust. I will wake each morning with a singular purpose: to make this city better for you than it was the day before. There are many who thought this day would never come, who feared that we would be condemned only to a future of less, with every election consigning us simply to more of the same. And there are others who see politics today as too cruel for the flame of hope to still burn. New York, we have answered those fears. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. Hope is a decision that tens of thousands of New Yorkers made day after day, volunteer shift after volunteer shift, despite attack ad after attack ad. More than 1 million of us stood in our churches, in gymnasiums, in community centers, as we filled in the ledger of democracy. And while we cast our ballots alone, we chose hope together. Hope over tyranny. Hope over big money and small ideas. Hope over despair. We won because New Yorkers allowed themselves to hope that the impossible could be made possible. And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. Now it is something that we do. Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. Central to that vision will be the most ambitious agenda to tackle the cost of living crisis that this city has seen since the days of Fiora LaGuardia. An agenda that will freeze the rents for more than 2 million rent-stabilized tenants. Make buses fast and free. And
and deliver universal child care across our city. Years from now, may our only regret be that this day took so long to come. This new age will be one of relentless improvement. We will hire thousands more teachers. We will cut waste from a bloated bureaucracy. We will work tirelessly to make lights shine again in the hallways of NYCHA developments where they have long flickered. Safety and justice will go hand in hand as we work with police officers to reduce crime and create a department of community safety that tackles the mental health crisis and homelessness crises head on. Excellence will become the expectation across government, not the exception. In this new age we make for ourselves, we will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, a single mom still waiting for the cost of groceries to go down, or anyone else with their back against the wall, your struggle is ours too. And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. This new age will be defined by a competence and a compassion that have too long been placed at odds with one another. We will prove that there is no problem too large for government to solve and no concern too small for it to care about. For years, those in City Hall have only helped those who can help them. But on January 1st, we will usher in a city government that helps everyone. Now I know that many have heard our message only through the prism of misinformation. Tens of millions of dollars have been spent to redefine reality and to convince our neighbors that this new age is something that should frighten them. As has so often occurred, the billionaire class has sought to convince those making $30 an hour that their enemies are those earning $20 an hour. They want the people to fight amongst ourselves so that we remain distracted from the work of remaking a long broken system. We refuse to let them dictate the rules of the game anymore. They can play by the same rules as the rest of us. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot,
It is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. When we enter City Hall in 58 days, expectations will be high. We will meet them. A great New Yorker once said that while you campaign in poetry, you govern in prose. If that must be true, let the prose we write still rhyme, and let us build a shining city for all. And we must chart a new path, as bold as the one we have already traveled. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. And yet, if tonight teaches us anything, it is that convention has held us back. We have bowed at the altar of caution, and we have paid a mighty price. Too many working people cannot recognize themselves in our party. And too many among us have turned to the right for answers to why they've been left behind. We will leave mediocrity in our past. No longer will we have to open a history book for proof that Democrats can dare to be great. Our greatness will be anything but abstract. It will be felt by every rent-stabilized tenant who wakes up on the first of every month, knowing the amount they're going to pay hasn't soared since the month before. It will be felt by each grandparent who can afford to stay in the home they have worked for, and whose grandchildren live nearby because the cost of childcare didn't send them to Long Island. It will be felt by the single mother who is safe on her commute and whose bus runs fast enough that she doesn't have to rush school drop-off to make it to work on time.
And it will be felt when New Yorkers open their newspapers in the morning and read headlines of success, not scandal. Most of all, it will be felt by each New Yorker when the city they love finally loves them back. Together, New York, we're going to freeze the... Together, New York, we're going to make buses fast and... Together, New York, we're going to deliver universal... Let the words we've spoken together, the dreams we've dreamt together, become the agenda we deliver together. New York, this power, it's yours. This city belongs to you. Thank you. के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी कामयाबी के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क ने आज तब्दीली के लिए वोट दिया। मिली क्या? नहीं। मैम से ही पूछ ले। क्या पूछना है? वो आपका फेस सीरम। सीरम नहीं, मेरे ग्लो का राज है लक्स। ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ जो दाग धब्बे कम करे और दे सीरम जैसा ग्लो। लक्स। K&N's introducing Firebolts. Firebolts. Safe and healthy chicken. K&N's. पीकाबू। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी प्रोटेक्शन और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, जो रोज पॉसिबल बनाए मेरा प्यार। और नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स इसकी इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे अच्छा नहीं लगता। हमें एक्चुअली खानदान तो भाता है, लेकिन गंदे बर्तनों का ये ढेर सताता है। बर्तनों का ढेर तो सताएगा जब घर में कोई भी नीला पीला लिक्विड आएगा। ले आए 3 गुना ज्यादा ताकत वाला मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप जमी चिकनाई आसानी से हटाए, 3 गुना ज्यादा बर्तन चमकाए और आपका दिल फरमाए। बर्तन धोना इतना आसान, तो कल फिर जमा कर लेते हैं खानदान। मैक्स लिक्विड दे आम लिक्विड से 3 गुना ज्यादा सफाई। रोज धूप से होते हैं स्पॉट्स और डलनेस। हम धूप से बचते हैं ऐसे, पर बचना चाहिए ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन, जस्ट 2 फिंगर्स और सन डैमेज से नो वरी। SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, विटामिन C सीरम बनाए अंदर से ब्राइट। ये है नॉन स्टिकी विद नो वाइट कास्ट। स्टे ब्राइट इन द सन ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन। सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट में नोवोमिन है, जो सेंसिटिव टीथ को 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रिपेयर करता है। ये दांतों के सेंसिटिव एरियाज को टारगेट करके एक टूथ लाइक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। इट जस्ट वर्क्स। मैं ले लेता हूँ। तो फिर 1 लीटर कम लेना। सोच रहे हैं ना क्यों? क्योंकि नेस्ले बुनियाद से बने 1 लीटर सिर्फ 270 रुपए में, जिसमें है आयरन प्लस, कैल्शियम, विटामिन सी। सिर्फ बचत नहीं, फायदा भी। अब मेरा नुमान पीछे नहीं रहेगा और एग्जाम्स में भी देगा अपना बेस्ट। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। अम्मी, नहारी खा के तो मजा ही आ गया। थैंक यू बेटा। आपा, पर अब ये निहारी की चिकनाई और बदबू निकालना आपके लिए सर का दर्द होगा। सर का दर्द? नहीं, मेरे पास है विम के सिरके की ताकत। सिरके और लीमू का ताकतवर फॉर्मूला निकाले चिकनाई और बदबू चुटकियों में। नया विम डिश वॉश लिक्विड। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं है।
और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। जाओ खेलो। मैं भी अपने बच्चे को एक्टिव देखना चाहती हूँ। इस उम्र में बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है प्रोबायोटिक्स और खास न्यूट्रिएंट्स बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। नेस्ले लैक्टो ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। नेस्ले। गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई, गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई। धोएं? इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये इन जिद्दी गहरे दागों को भी कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। पीकाबू। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी प्रोटेक्शन और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, जो रोज पॉसिबल बनाए मेरा प्यार। और नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स इसकी इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। बेटा बचाओ। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, सोचा थोड़ी बचत कर ले। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। ओह, मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। अम्मी नहारी खा के तो मजा ही आ गया। थैंक यू बेटा। आपा, पर अब ये निहारी की चिकनाई और बदबू निकालना आपके लिए सर का दर्द होगा। सर का दर्द? नहीं, मेरे पास है विम के सिरके की ताकत। सिरके और लीमू का ताकतवर फॉर्मूला निकाले चिकनाई और बदबू चुटकियों में। नया विम डिश वॉश लिक्विड। विंटर्स में ड्राई स्किन नरिश करो विद पॉन्ड्स बॉडी लोशन। इसका डीप एक्शन फॉर्मूला गहराई में जाकर स्किन को नरिश करता है। यही नहीं, पॉन्ड्स लोशन खरीदने पर मिले 100 तोला सोना जीतने का मौका। बॉटल पर दिए गए लेबल को पील करें, QR कोड स्कैन करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टाइम टू मेक मिरेकल्स हैपन। फ्लैश फाइबर की तेज रफ्तार ऑफर से एंजॉय करो 75 MBPS के पैकेज पर 100 MBPS का हाई स्पीड इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए। साथ ही स्ट्रीम करो नॉन स्टॉप विद शॉप टीवी। सबसे तेज, सबसे जबरदस्त फ्लैश फाइबर। नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। कॉल 1218 और डाउनलोड द UPTCL ऐप नाउ। मिली क्या? नहीं। मैम से ही पूछ ले। क्या पूछना है? वो आपका फेस सीरम। सीरम नहीं, मेरे ग्लो का राज है लक्स। ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ, जो दाग धब्बे कम करे और दे सीरम जैसा ग्लो। लक्स। जाओ खेलो। मैं भी
अपने बच्चे को एक्टिव देखना चाहती हूँ। इस उम्र में बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है प्रोबायोटिक्स और खास न्यूट्रिएंट्स बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। नेस्ले लैक्टो ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। नेस्ले। हर स्वाइप हर स्ट्रीम नॉन स्टॉप डिजिटल सीन। लाइफ है फुल ऑनलाइन फुल एक्सट्रीम। जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। Stay connected, stay original. Let's get digital with Zong 4G. बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गर्म पानी, फिर दूध और चीनी और बन गई 30 रुपए में ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गर्म पानी, फिर दूध और चीनी और बन गई 30 रुपए में ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया। अम्मी नहारी खा के तो मजा ही आ गया। थैंक यू बेटा। आपा, पर अब ये निहारी की चिकनाई और बदबू निकालना आपके लिए सर का दर्द होगा। सर का दर्द? नहीं, मेरे पास है विम के सिरके की ताकत। सिरके और लीमू का ताकतवर फॉर्मूला निकाले चिकनाई और बदबू चुटकियों में। नया विम डिश वॉश लिक्विड। बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गर्म पानी, फिर दूध और चीनी और बन गई 30 रुपए में ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया। मिली क्या? नहीं। मैम से ही पूछ ले। क्या पूछना है? वो आपका फेस सीरम। सीरम नहीं, मेरे ग्लो का राज है लक्स। ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ, जो दाग धब्बे कम करे और दे सीरम जैसा ग्लो। लक्स। जाओ खेलो। मैं भी अपने बच्चे को एक्टिव देखना चाहती हूँ। इस उम्र में बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है प्रोबायोटिक्स और खास न्यूट्रिएंट्स बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। नेस्ले लैक्टो ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। नेस्ले। K&N's introducing Fire Bolts. Fire Bolts. Safe and healthy chicken. K&N's. रोज धूप से होते हैं स्पॉट्स और डलनेस। हम धूप से बचते हैं ऐसे, पर बचना चाहिए ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन, जस्ट 2 फिंगर्स और सन डैमेज से नो वरी। SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, विटामिन सी सीरम बनाए अंदर से ब्राइट। ये है नॉन स्टिकी विद नो वाइट कास्ट। स्टे ब्राइट इन द सन ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन। आज पाकिस्तान में हर 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन की कमी है, इसलिए जरूरी है नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस। So crunchy, fully infused with flavor for the first time in Pakistan. Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. सिर्फ एक कप। इससे बनते ही 2 कप है। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल पावरफुल पल्सेटर और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। नन्हा सा जहन, बड़ा कुछ है सीखना। नन्ही सी जान, लेना चाहता है बड़े कदम। इसीलिए इसके नन्हे पेट के लिए बनी नेस्ले सेरेलैक न्यूट्रीब्लेंड की बड़ी ग़िज़ा। इसमें शामिल विटामिन B1 और आयरन,
ज़हनी नशोनुमा में और प्रोटीन एंड कैल्शियम ग्रोथ में मदद करें। ये सब मिलकर बनाए सेरेलैक का स्पेशल न्यूट्रीब्लेंड, जिसमें है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। हर स्वाइप हर स्ट्रीम नॉन स्टॉप डिजिटल सीन, लाइफ है फुल ऑनलाइन फुल एक्सट्रीम। जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। Stay connected, stay original. Let's get digital with Zong 4G. पीकाबू। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी प्रोटेक्शन और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, जो रोज पॉसिबल बनाए मेरा प्यार। और नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स इसकी इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई, गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई। धोएं। इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये इन जिद्दी गहरे दागों को भी कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल पावरफुल पल्सेटर और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, जो बनाए परफेक्ट 4 कप हर बार। फ्रॉम नेस्ले। ओलिविया हेयर कलर, न्यू लुक न्यू पैक। ओलिविया की वही बेहतरीन क्वालिटी और तजर्बा, अब नई मॉडर्न पैकेजिंग में। हो तब्दीली की बात या नई शुरुआत, एतमाद के साथ। नाउ विद अ न्यू वाइब्रेंट लुक। ओलिविया, शुक्रिया। नेक्स्ट। वो निहारी को वाइप कर देगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है Stay bright in the sun. ऐसे न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन। रॉयल एयर प्यूरिफायर विद एडवांस फीचर्स। न्यूयॉर्क में नई तारीख रकम, मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हो गए। न्यूयॉर्क इलेक्शन में 2001 के बाद सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड, 17 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठाएंगे। विक्ट्री खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत खत्म कर दी, न्यूयॉर्क के अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। न्यूयॉर्क में मेयर के लिए ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन न्यूयॉर्क इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार दे दिया। साबिक सदर बराक ओबामा की कामयाबी पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। वर्जीनिया में डेमोक्रेट की एबिगेल स्पेनबर्जर पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गई। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। भारतीय निजात गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर बनी है।
लाहौर की फ़ज़ा बेहतर होने लगी, आलूदगी में नुमाया कमी, AQI 158 रिकॉर्ड, आलूदा ममालिक की फहरिस्त में भी नीचे चला गया। 8वें नंबर पर मौजूद, कराची 6ठे नंबर पर आ गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, बाबूसर, नांगा पर्बत और बेटोगा की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का अलर्ट जारी। सत्ताईसवीं तरमीम पर हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ एक नुक्ते पर पहुंचने का दावा, MQM, ANP और BAP समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का वादा। इसहाक डार ने तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो उसे अवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। वाज़ेह किया कि सूबों के हुकूक पर कोई यकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीच इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। फैसल बेस से रानो रीच को बजरिया C-130 इस्लामाबाद भेजा गया। रानो रीच की ट्रेनिंग, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से हरा दिया। 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब्बास आफरीदी की क़यादत में सिक्सिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हांगकांग रवाना। और अमेरिकी रियासत केंटकी में एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह।